3. Namaskar. Good morning, everyone. All the guardians, parents, of course, my colleague teachers. As you know, entire world is suffering with COVID-19. But how long we can stay ourselves along with our children in lockdown? We had to busy our children with the study. For that, team of vibrant teachers of Sri Krishna Ideal Public School has already started online classes from the first week of May. Our teachers working since morning till night to prepare audio, video, classwork, doubt session. Even sometimes children are talking at night, but teachers happily they are listening their problem and they are solving their problem. So all the guardians, students, you are requested kindly to attend online classes, prepare yourself for the examination. School is planning to conduct examination second week of June. Stay at home, keep safe yourself, enjoy holiday, at the same time must attend your classes. मैं श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल कक्षा सप्तम के कक्षाचार्य तथा विद्यालय के आचार्य गण के तरफ से आप सबके लिए मैं एक सूचना प्रेषित कर रहा हूं कि ये जो वैश्विक महामारी कोविड-19 है, कोरोना, इस त्रासदी के चलते सारा मानवीय गतिविधि लगभग ठप सा हो गया है। ऐसे में जीवन तो ठहरती नहीं, जीवन चलने का नाम है और सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, होने भी चाहिए। तो मैं आप सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन करूंगा कि अपना विद्यालय ऑनलाइन क्लास सुविधा प्रदान कर रही है विगत 20-25 दिन से शायद। तो इसमें आप सबका सहयोग नितांत आवश्यक है और बच्चे को 9 बजे से 1 बजे तक होना चाहिए ऑनलाइन। और दूसरी बात ये कि पुस्तक जब तक बच्चे नहीं खरीद लेते तो ये मुझे लग रहा है, ये मेरा अपना निजी विचार है कि हम कामयाब नहीं होंगे अपने लक्ष्य में। तो इसके लिए आप सभी अभिभावक गण से निवेदन है कि पुस्तक खरीद लें और जो कुछ भी त्रुटियां हैं या कुछ सुझाव है, महत्वपूर्ण सुझाव, वो भी हमारे साथ शेयर करें ताकि ये कार्य निर्बाध गति से चलता रहे। धन्यवाद। Morning everyone. There is a pandemic COVID-19 and I hope everyone is staying at home. I need to tell you something that we are working from home and you guys also should work from home, okay? And there should be a proper work. Like I'm the class teacher of 6B, okay? So I want to let you know about my class strength and everything. So there is a 50 student. Out of that, total 31 people is connected with the connected with the WhatsApp group, and 18 children is activate who is like participating in the class. I want everyone to participate this class. This is really a revolutionary for us. Okay, so I request everyone to please attend the class. And one more thing, there is your PT1 will be there like in second week of June. Okay, so guys, make sure you guys are studying. Okay, you guys are doing well. And next, I am pleading to the parents. Please, parents, make the children buy their books because they really need it. Please make it happen. Thank you, everyone. Be safe. Be at home. Good morning everyone, my respected guardians and my dear children. As we all know that we are caught amidst of a harsh time, which is coronavirus.
and it has influenced all our aspects of daily routine work. But in this harsh time also, we are doing our everything possible at our first possibility. So if everything is to be pace with pace, then guardians are also requested to make sure that they are buying books for their children, which is ultimately beneficial for their wards only. Okay, we are doing everything, audio, classwork, homework, and checking their homework, making a firm relation with students so that they can't feel that they are alone in their studying aspect, because we are working very hard here from our home only. So guardians are again requested to make sure that they book buy for their wards, because then only your wards can do your homework and classwork also. नमस्ते आदरणीय अभिभावक एवं मेरे प्यारे बच्चों, श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लास शुरू है। आज की इस वैश्विक महामारी में हमारे बच्चे पढ़े, इसकी व्यवस्था पूरी हो रही है। ऑनलाइन क्लास में आप शामिल हो। क्लास 5C के क्लास टीचर के हैसियत से मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अपना बुक खरीद लें, निश्चित रूप से खरीदें, क्योंकि सिलेबस शुरू हो गई है, बहुत पहले से पढ़ाई जा रही है। आप सभी बच्चों में 25 बच्चे व्हाट्सएप से जुटे हुए हैं, शेष जो नहीं जुटे उनके लिए आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी जुटें, अपना बुक की भी व्यवस्था करें। धन्यवाद। Good morning, guardians. As we are facing a drastic situation and we don't know till when the schools will be closed, but I'm also a guardian. My children are also studying. So what I think that in this situation, to make the children idle in the home, somewhere devil will be in their mind. So it's better that they will continue their studies, and all the schools are trying their level best in this situation also to uplift, to give some knowledge to the children. I think this is the best opportunity for the guardians also to spend some of the time with the children. They can also understand the mental ability of the students by the motivation of the teachers and the schools. Most important thing is that the students, those who are at the home, they have to study. They don't have any other option. Being an adult person, they have some other option, but if we will give some other option to the children, somewhere they will be misguided. So being a guardian, I think that students' education is the foremost thing for a guardian, and every of the students should spend some time with the parents, and the teachers are also motivating. Schools are available with the books and all the study materials, so I request all the guardians kindly purchase all the study materials and give some time to your children so that you can understand the mental ability of your children, as well as you can also guide them for their future. Good morning, everyone. I'm the teacher of Sri Krishna Ideal Public School. So, everyone, I would like to share some things regarding the school activities. In this day, our school is providing online teaching service in this pandemic situation scenario. You know very well about it. So, our school is providing online service, online teaching service, and on the 2nd of June, our school providing the PT first exam. So it's my humble request to all the guardians with the students that students, you will have to participate in this online exams. Yes, it will be very good, and it will be your first opportunity to participate in the online exam. So I'm just concluding my topics. You will have to follow the situation. You know very well the situation, so it's clear. आप सभी अभिभावकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विद्यालय ने ऑनलाइन स्टडी की सुविधा आप सबको उपलब्ध कराई है, आपके बच्चों को। और इस पावन पुनीत कार्य में हमें आपके साथ की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आपका साथ नहीं होगा हम उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकते जो हमने सोचा है, जो हमने चाहा है। आप भी अपना भरपूर साथ दीजिए इस मुसीबत की घड़ी में जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उसमें थोड़ा समय अपने बच्चे के साथ गुजारिए। बच्चा ठीक से हमारे द्वारा
भेजी गई जानकारियों को सही ढंग से समझ पाए, इसके लिए ज़रूरी है उसके पास कॉपी किताबों का होना। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप विद्यालय परिसर में आकर अपने बच्चे के लिए कॉपी और किताबें ले जाएंगे। हमने जून के द्वितीय सप्ताह में प्रथम मासिक परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की है और हम चाहते हैं आपका बच्चा भी घर पर रहकर अच्छी पढ़ाई कर एक देश का अच्छा नागरिक बने, क्योंकि इस मुसीबत के समय में हम सबको रुकना नहीं है, बल्कि कदम से कदम बढ़ाकर इस माहौल में रहकर कुछ करना है। और ज्ञान तो माध्यम है जिससे हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो इस मुहिम को भी हमें नहीं तोड़ना है, नहीं छोड़ना है। तो एक बार फिर से आपसे पुनः अनुरोध है कि आप विद्यालय परिसर में आइए और अपने बच्चों के लिए कॉपी किताबें ले जाइए, ताकि आपका बच्चा सुचारू रूप से हमारे द्वारा भेजे गए ऑडियो वीडियो का ज्ञान अर्जित कर सके और वो प्रथम मासिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।